Hi everyone, welcome to today's video. So on today's video, I'm going to discuss 8 wealth trends that are shaping India as of now. This is going to have massive impact not only on you, but people around you, your kids, your neighbors, your family, everyone around you massively. If you are someone who is starting a business, if you're someone in a job, if you're worried about taxation, please listen to this video 2 times. It's one of the most important videos I'm doing on this channel. I'm going to break down with practical understanding, with practical examples, critical elements to how India is shaping up when it comes to its wealth. So the first key trend that is shaping up in India right now is that a lot of clean millionaires are migrating and leaving India. Now you'll say कि यार मुझे क्या फर्क पड़ता है, देशद्रोही छोड़ जाए, देश this that stuff. Guys, see, when a millionaire is someone who has more than 8.3 CR of liquid wealth, if they leave India, then the burden of taxation falls on others. ऐसा तो होगा नहीं कि गवर्नमेंट को बोले जाने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता. भाई उनका नुकसान होता है. They need money, they need tax money. That's probably the only thing that politicians care about, because if their kitty is getting empty, where will they do all this freebie stuff from? Now these are not just opinions, okay? So here is the data, and this comes from Henley, and here you can see that when it comes to millionaire migration, India right now ranks number 2. चाइना इज नंबर 1, वहाँ से सबसे ज़्यादा मिलियनर्स जा रहे हैं. इंडिया से नंबर 2 पे मिलियनर्स जा रहे हैं. अब यार इसमें हो ये जाता है कि फॉर एग्जांपल हम खुश हो जाते हैं कि यार चाइना से तो इतने चले गए, इंडिया से थोड़े से कम गए. भाई ये भी तो देखो कि व्हाट इज द वेल्थ लेवल इन चाइना वर्सेस इंडिया राइट नाउ. ओके, सो फ्रॉम दैट एंगल, लॉस ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 7,500 millionaires in India compared to almost 11,000 in China. Honestly, India is getting hurt more here. This is point number 1. This is going to happen. Now a natural question comes कि अच्छा ऐसा क्यों? आप कैसे प्रोग्नोसिस कर सकते हो? How can you give this estimate that millionaires are going to leave India? Millionaires care about 3 things, if I have to boil it down. The first key thing that they care about is the quality of life. For example, pollution ज़्यादा है. What do you think a millionaire is going to do? They are probably going to leave. I left Delhi because of pollution issues. I did not want my kids to get exposed to chamber-like pollution. It made no sense to me. Why would I live there and destroy the health of my kids? So I had to migrate from there. Now, if this situation, the crumbling of critical infrastructure keeps on happening in India, I don't see why people who want quality life will live in India from that perspective. So this is point 1. Point 2 is the return on taxes, that a lot of people are completely okay paying very high taxes, but they always ask कि return में क्या मिल रहा है from a practicality viewpoint. यार अब फालतू के डेटा की बात नहीं करते, ऑनेस्ट बातें करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर, एजुकेशन, फैसिलिटीज, दैट दीज आर 3 क्रिटिकल थिंग्स दैट वी नीड. नाउ दैट कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर इज आउट ऑफ पॉकेट फॉर मी. इफ आई हैव टू सेंड माई किड्स टू स्कूल अगेन, आई हैव टू पे देयर फीस, सो दैट्स नॉट फ्री फॉर मी. इसके ऊपर मैं दुनिया भर के टैक्सेस भरता रहूँ. सो वेयर इज द रिटर्न ऑन टैक्सेस, राइट? दैट्स अ नेचुरल क्वेश्चन दैट आई विल आस्क. नाउ लेट मी टेल यू वन मोर एग्जाम्पल अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर. राइट नाउ, सिटिंग इन 2024, व्हाट डू यू थिंक इज द नंबर 1 रीजन व्हाई पीपल लूज लाइफ when it comes to road accidents? कि road accidents में what is the number 1 reason why people lose their life? द आंसर इज, आपको लगेगा कि लोग दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं. नो, दैट्स नॉट द रीज़न. द रीज़न इज पॉट होल्स. पॉट होल्स मतलब सड़कों पे गड्ढे. ओके, दैट इज द रीज़न वाई. हुज फॉल्ट इज इट? इट्स गवर्नमेंट्स फॉल्ट. 100% गवर्नमेंट्स फॉल्ट. हु एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग रोड? अक्षत श्रीवास्तव. द शॉर्ट आंसर इज नो, इट्स गवर्नमेंट. वी आर पेइंग टैक्सेस. रोड आपकी ठीक ठाक नहीं बनती, पीपल लूज लाइफ. आप बिना हेलमेट के निकल जाओ, आपको ठुल्ले पकड़ लेंगे, राइट? एंड दे विल कलेक्ट लाइक 1,000 रुपीज़, 500 रुपीज़, वॉट नॉट. कोई बेचारा मर जाता है इंसान बिकॉज ऑफ पॉट होल्स. What compensation do they get, right? So that is the issue in infrastructure. These are practical issues. Now comes a natural response कि नहीं यार, इंडिया में तो इतने millionaires बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. भाई देखो, there are 2 types of millionaires in India. One are called as government supported millionaires, billionaires, and second are non-government supported millionaires, billionaires. Okay? अब इसकी exact tagging ऐसे मत कर देना. This is just something I'm teaching you from a practical viewpoint. See, what is it that billionaires and millionaires are doing in India? One of the models that they adopt is that they take a lot of debt. Okay, debt मतलब पैसा उठाना from banks and what not. And millions, billions dollars are being picked up in the form of debt. This is public money. Okay. Now, many millionaires in India depend on this, that they get easy access to debt. They get government contracts. They get a bunch of wealth building opportunities. So they are like, government friends, millionaires, billionaires. They, one form or the other, they are getting easy access to capital, whatnot. The second are non-government oriented entrepreneurs, so to say. भाई ये किस तरीके के लोग हैं? For example, अब इंटरनेट से बैठ के आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हो. A lot of internet based entrepreneurs are getting created in India. Not only in India, but
across the world, right? So उनका ऐसा कुछ नहीं है कि they have to raise debt or they have to like depend on some ecosystem कि भाई उनको सस्ता टिकाऊ लोन मिले and all that stuff. That is not needed. Many people are becoming millionaires, billionaires that way. Now what incentive do they have in terms of staying in India? That is a question that we need to ask, because they will always ask on return on taxes. अभी आप जाके election manifesto पढ़ो for different political parties. What you will understand is that election में taxes कम करने की बात तो हो ही नहीं रही है, right? No one bothers. Now comes a natural response कि अच्छा ऐसा क्यों? Okay, मैं आपको वो भी बता देता हूँ. See, in India right now there are only 5%. मैंने 5% भी ज़्यादा ही लिख दिया. Only 5% people pay direct taxes. 95% do not bother about direct taxes. Tax बढ़ जाए, tax घट जाए, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता. Number 2 point, what is it that people bother about? Well, they bother about freebies. ऐसा क्यों? Because 80 crore people depend on freebies in India right now. This is a hard hitting fact. Okay. Now, what do people वरी अबाउट इन इलेक्शंस? वेल, क्रेव फॉर फ्रीबीज कि जितना सस्ता माल, फ्री माल हमें दे दो, मजे ही मजे, राइट? सो दैट्स अ सिंपल पॉइंट. नंबर 3 पॉइंट, दैट इन इंडिया पीपल एडजस्ट टू वट एवर, राइट? फॉर एग्जाम्पल, रोड्स पे पॉट होल्स हैं, नो प्रॉब्लम, चला लेंगे गाड़ी. पॉल्यूशन है, गैस चेंबर बना जा रहा है, हमारा कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ता, रह लेंगे. अच्छा, मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वाटर टैंकर माफिया वी विल कॉन्टैक्ट एंड वी विल ब्रिंग वाटर, वॉट नॉट, दे देंगे 1200-1300 रुपए, 1200, 1300 रुपीज, दिस दैट. सो वी एडजस्ट टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड देयर इज नो इंसेंटिव फॉर पॉलिटिशियंस टू डू anything for you. That's the bottom line. चर्चाएं हो रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बन गया, उतना बन गया एंड ऑल दैट स्टफ. बहुत अच्छी बात है यार, बन गया. प्रैक्टिकली बताओ ना, राइट? आई मीन व्हाट्स द यूटिलिटी? आपको हेल्थ केयर आपकी सस्ती हो रही है, एजुकेशन आपकी सस्ती हो रही है, फूड इन्फ्लेशन आपका सस्ता हो रहा है. शॉर्ट आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट. नन ऑफ दिस इज हैपनिंग एंड इट विल नॉट हैपन. प्लीज रिमेंबर अ सेंटेंस दैट अ रिच पर्सन हैज 100 ऑप्शंस. A poor person has only one, that is to depend on the government. Unfortunately, we live in times when majority of our population depends on the government. Now call it the flaw of democracy or whatever it is. We develop Stockholm syndrome. Stockholm syndrome का मतलब क्या होता है कि एक आलिया भट्ट की मूवी भी थी जिसमें उसको किडनैपर से प्यार हो जाता है, right? The person who kidnapped her, she fell in love with that kidnapper, right? So that situation is called as Stockholm syndrome. इसके बारे में आप पढ़िएगा, very fascinating concept. So this is what is happening, right? The government, which is supposed to improve your life, provide you facilities. Now if it is not doing its job properly and if it is called into question, a bunch of people or majority of the people will jump in support of the government saying कि यार तुम कौन होते हो question पूछने वाले. A natural question needs to be asked here is that hey, why are people showing that level of allegiance? इतना तो अपने परिवार वालों को नहीं दिखाते यार लोग allegiance. The extent to which people defend politicians. The reason is Stockholm syndrome, because almost like 60-70-80% जनता is completely depend on the government now. Free भी मिल रही है, उनको लग रहा है free फोकट का सब कुछ मिल तो रहा है, चलने दो. So that's the point and that's trend number 1 and this is only going to accelerate from this. Then comes trend number 2, which is rise of extreme capitalism in India. देखा, दो तरीके के इकोनॉमिक सोशो पॉलिटिकल मॉडल्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज कम्युनिज्म एंड अनदर इज कॉल्ड एज capitalism. So that's a spectrum on which you need to look at things. Now communism means होता है कि basically if let's say that I am a hunter, I go and hunt something, I bring it and then the leader of the village tells me you know what, आप hunt पकड़ के लाए हो and now I will distribute it equally among villagers. So that is a way is called as communism. On the flip side, the extreme form of capitalism is that you eat what you hunt. So if I'm a hunter, I catch something, I will eat it. Khatam kahani, right? So this is capitalism. In India, what is happening is it's a weird type of capitalism which is happening. Basically, our capitalism is fueled on public debt. Now, how does that mechanism exactly play out? Let me explain. See, debt गवर्नमेंट जो है वो कितनी भी प्रिंट कर सकती है. इट कैन प्रिंट इन्फिनिट अमाउंट ऑफ मनी. नाउ इफ कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स गेट अनइक्वल एक्सेस टू दिस डेट कि भाई ट्रिलियन उठा लिए मार्केट से, बिलियन उठा लिए मार्केट से, एंड इफ दे विन व्हाट डू दे डू? वेल, they pocket the gains for them and their family. Now if they lose, what happens? Well, the government jumps in and subsidizes them कि लोन माफी कर दी, this that stuff. अब लोन माफी कर दी, इसका ये मतलब थोड़ी है कि people will not pay. People are still paying the price. How? In the form of high inflation, increase in price rise. There is always a cost to economic inefficiency. That is how it is and that is the rise of extreme capitalism. Now giving you some indications here. So आप इंडिया में देख लो, right? For example, telecom. It's a critical product. Who owns it? You guys can guess. Ports, who owns it? You guys can guess. Airport, who owns it? You guys can guess.
government big contracts, who guys own it? You guys can guess. Power plants, who will own it? So आगे चल के होने क्या वाला है, brokerage business हो गया, telecom, media rights, whatever it is, everything critical is going in private hands. Nothing will be left. There will be handful of families that will rule India. They will be sitting on top. How did they create their business? Here, right? So this is where the point is. अब एक natural सवाल आएगा कि Meta और Amazon भी तो करते हैं, उनके बारे में क्यों कुछ नहीं बोलते तुम? Okay, see, Meta and Amazon are innovation oriented business. They have shaped industries. They have global audience. आप बता दो भैया कि कितने पावर प्लांट्स आपको लगे मिलते हैं इन अमेरिका, इंडियन पावर प्लांट्स जो चलते हैं. आप में से कितने लोग फेसबुक यूज़ करते हो, अमेजॉन यूज़ करते हो? Amazon, Meta is based on innovation. That's point one. Point two, look at their balance sheet. कि भाई they have been able to build their business by reinvesting their profits. Are they capitalist? 100%. Do they have problems? 100%. But how is Indian capitalism performing? आपने एक्सपोर्ट करते हुए देखा है बड़े इंडियन बिजनेसमैन को? हैंडफुल, right? They will be able to ensure that quality that the world is craving for their product. In India, we do licensing, people's business get killed, and that's how it is. Right from shopkeeper, kirana store now to literally everything, and it's already shaping up. This is a trend that will accelerate. Third key thing, there will be high taxation which will take place. Why will high taxation take place? It's very simple that गिन चुन के handful of people are there. अब तो बात ही करनी छोड़ दी है. No one bothers about taxation anymore. Why? I showed you that tweet. That was the reason why. 5% ही तो लोग दे रहे हैं, 5% का काट लो जो काटना है, राइट? हल्ला मचा लो जितना मचाना है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा उन्हें, राइट? सो दैट्स अ सिंपल पॉइंट. नाउ अ मोर नेचुरल क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड दैट व्हाट टाइप ऑफ पीपल विल पे हाई टैक्सेशन? वेल, इट्स द मिडिल क्लास पीपल, सैलरीड पीपल हु विल पे हाई टैक्सेशन. इनफैक्ट जो आपका TDS करता है वो पहले करता है एंड सैलरी बाद में आती है, सो टू से, राइट? सो बिफोर गेटिंग योर ओन मनी you have to pay taxes. If you are a salaried person in India, that's the reality. That's how it is. There is literally a handful of you and you will always be made to pay very high taxes because you are very easy to track. आपका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है कि आपको एक सोर्स ऑफ इनकम है, वेरी इजी टू ट्रैक, वेरी इजी टू टैक्स, दिस दैट स्टफ, कि वो ड्रेकोनियन चीज होती चली जाएगी. देयर इज नो सोल्यूशन टू दिस. अब एक नेचुरल सवाल आएगा कि अच्छा यार इसके लिए कर क्या सकते हैं? सो देयर आर टू थिंग्स दैट आई विल टेल यू. नंबर वन इज दैट इफ यू आर अ सैलरीड क्लास, लर्न टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस. इट्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल कि आप स्मॉल बिजनेस बनाना सीखो, बिकॉज बिजनेस में क्या होता है कि यू आर टैक्स्ड ऑन प्रॉफिट, नॉट ऑन योर रेवेन्यूज. होता क्या है कि देर इज रेवेन्यू, देन देर आर एक्सपेंसेस एंड देन देर इज प्रॉफिट. सो प्रॉफिट पे टैक्स लगता है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, बट सैलरी में क्या होता है, इनकम पे लगता है, विच इज लाइक योर रेवेन्यू. सो डेफिनेटली अ बिजनेस क्लास पर्सन विल पे de facto less taxes compared to a salaried class person. That's the first key thing you can say. Second key thing, आप बोलोगे कि यार you know what, यार बिजनेस स्टार्ट करना तो बहुत मुश्किल चीज़ है, और क्या कर सकते हैं? Okay, so what you can do is that you can explore options outside India. Again, देशद्रोही बोलना है, जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. If 100 youngsters benefit from my practical talk, I will be very happy. So on that note, definitely figure out options outside India where you can earn more. You are taxed less. फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेस्टिनेशन आप उठा लो यार, दुबई में 0% पर्सनल इनकम टैक्स है. और इन सिंगापुर better infrastructure, you are paying what 20 odd %, right? Europe mein, if you go, yes, taxation is high, but facilities are more. So bunch of different options are there. On top of that, what is happening now is that there is massive mobility that is being given to you. For example, many governments are structuring new visas. For example, Dubai has an influencer visa. Agar aap influencer ho, you can apply under that line. Similarly, digital nomad visa जो एस्टोनिया में होता है. So all these things are there. Now अगर आपको ये information interesting लग रही है, I am doing a workshop in Mumbai. It will allow you to understand how to execute all these points. It would allow you to understand about a different asset class, taxation, how to preserve your wealth, how to grow your wealth, how to explore better options. सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा पॉइंट वाइज मैनर में, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझाऊंगा. इट्स अ 4-day वर्कशॉप, वेरी इंटेंसिवली टॉट, मोर देन 16 hours ऑफ टीचिंग टाइम. इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ 200 people. बिना एडवर्टीजमेंट के ऑलमोस्ट 50 सीट्स भर चुकी हैं, राइट? सो द रिमेनिंग 150 seats will get filled in maybe 2-3 days. So in case you are interested, definitely go check it out. Best part about these type of events is very simple, that it allows you to network with each other, form friendships of like-minded people who are practically driven, who want to build wealth, who want to improve their life. So इस तरीके के कॉन्टैक्ट्स बनाने से आप ही का फायदा है. सो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स. सो ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दैट द इंडियाज मिडिल क्लास विल डेफिनेटली श्रिंक. अब देखो यार, मिडिल क्लास के ना डिफरेंट डेफिनेशंस होती है. नाउ आई कैन नॉट टेल यू ऑल डिफरेंट डेफिनेशंस, बट हियर इज एन इकोनॉमिक डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास, बट हियर इज वन वेरिएंट ऑफ इट. सी, बेसिकली मिडिल क्लास ये होता है कि जिनकी तनख्वाह 5 lakhs to 30 lakhs होती है पर ईयर.
इंडिया में ये है अभी 43 करोड़ हुए ना, 43 करोड़, सो 43 करोड़ लोग होंगे हु विल फॉल इन दिस बकेट। एंड इस तरीके से कुछ एस्टिमेटेड है कि इस तरीके से बढ़ेगी ये पॉपुलेशन। एंड यहाँ पे हम रिच लोगों की बात इसलिए नहीं करते बिकॉज कोई मतलब नहीं है, दे एनीवेज हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द मिडिल क्लास इज दैट ईदर दे आर गोइंग टू मूव टू दिस सेगमेंट ऑफ एस्पायरर्स, उनकी वेल्थ कम हो जाएगी, दे विल गो हियर, ओके, एंड अदरवाइज दे विल बिकम रिच। सो दीज आर टू ऑप्शंस, ओके। इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं है। वाई? बिकॉज यू आर बीइंग टैक्स्ड लाइक क्रेजी। इफ यू आर इन द मिडिल क्लास कैटेगरी देन इफेक्टिवली इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट टैक्सेशन आप मिलू के ईजिली 35% तो दे ही रहे हो, ओके। सो दिस इज द बॉटम लाइन। सो वॉट ऑप्शन डू यू हैव इफ यू कंटिन्यू टू पे दिस, ओके, बिकॉज यू हैव अ सर्टन वर्किंग लाइफ पॉपुलेशन। कितने साल आप काम करोगे यार? 25-30 साल इन अ कॉर्पोरेट जॉब, उसमें से भी आजकल सिचुएशन ये हो गई है कि आधा टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कभी भी नौकरी से निकाल दिया वगैरह वगैरह। सो लॉट ऑफ मिडिल क्लास विल फॉल हियर, ओके, दिस इज अ प्रॉब्लम। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज हॉरेबल राइट नाउ। इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप बात करके देखो, प्रैक्टिकली निकलो, बात करो आप आईआईटी में जो लोग हैं, आईएम्स में जो लोग हैं, मेरे तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, दे टेल मी। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑफ व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया। सो आपके पास ऑप्शंस क्या है, राइट? पहली चीज़ तो ये कि आप बाहर चले जाओ, राइट? अगर आप पढ़ लिखने में अच्छे हो, GMAT GRE ला सकते हो, थोड़ी बहुत आपके पास फंडिंग है, तो डेफिनेटली गो एंड डू दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन पोटेंशियली बिकम रिच। सेकेंड इज दैट आप डेट एंटरप्रेन्योर बन जाओ, राइट? उठाओ मस्त माल, राइट, फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स और वट एवर, राइट? थर्ड इज दैट आप क्लीन एंटरप्रेन्योर बन जाओ, राइट? दैट यू आर एबल टू बूटस्ट्रैप कंपनीज एंड वट एवर एंड यू आर एबल टू ग्रो। सो दीज आर इफेक्टिवली योर 2-3 ऑप्शंस। फोर्थ इज कि आप इन्वेस्ट बहुत अच्छे से करो, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। उसके लिए मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट गवर्नमेंट स्कीम्स आर गोइंग टू गिव यू रियली हॉरेबल रिटर्न्स। इसका क्लासिक केस स्टडी आती है PPF। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो कि PPF में अभी कितना चल रहा है रेट, 7.15%, 7.1%। दिस इज द इंटरेस्ट दैट यू आर गेटिंग। पहले कितना मिलता था? 8.7, 8.8 एंड ऑल दैट स्टफ। नाउ इट्स लाफेबल, ओके। वाई इज इट लाफेबल? बिकॉज अब आप आर्ग्यूमेंट अगर ये दे रहे हो कि pre-2014, pre-2013 इन्फ्लेशन वॉज वेरी हाई इन द इकोनॉमी, भाई साहब आपको कुछ नहीं आता, आप प्रैक्टिकली बात ही नहीं कर सकते। यू पिकअप 2019 की थिंग्स, बी इट फूड, बी इट पेट्रोल, बी इट एनी थिंग, राइट? कॉस्ट हैज गॉन अप और इट हैज गॉन डाउन। आपको तो इन्फ्लेशन दिखाते हैं 5% है, नो इट्स नॉट 5%, इट्स ईजिली 10%। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट फॉर मिडिल क्लास इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई। आप एयरलाइंस यूज़ करोगे, आप एजुकेशन यूज़ करोगे, बच्चों को स्कूल भेजोगे, रेंट आपकी किस रेट से बढ़ी है, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है, बट द रिटर्न दैट यू आर गेटिंग ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स इज गोइंग डाउन। सो yeah, so that's the bottom line, that if you don't learn how to invest, then आपकी invested wealth will keep on coming down. So what's the target that you should have? You should at least target to grow your wealth at more than 10%. अगर ये नहीं मिल रहा है, then you are working your way towards poverty. आगे चल के this scenario is not going to change. So then comes the next trend that, and this is the positive news, that people in India who invest, they are going to become rich. It's as simple as that. For example, आप अभी gold उठा लो, all time high. Real estate, theoretically all time high. Stock market, all time high. Crypto, Bitcoin, all time high. If you would have put your money in literally anything, you would have made crazy money. क्या this trend, is it going to change? The short answer is no. This trend is not going to change. In fact, just continuing to sit on cash forever is a horrible strategy. It will not help you at all. You will lose money like crazy. So having an understanding when to build bulk positions, how to cut positions, how to rotate across asset classes, all these are critical points. Again, I will teach all these points on my Mumbai workshop. Definitely go and check it out. Even if you're a beginner, you will be able to understand these points. So anyways, continuing. अब ये देखो PF वाला point तो बहुत आसान था. Currency devaluation वाला point is something that most people do not understand. मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल से बताता हूं, तो इन 2014 1 US dollar was around 60 rupees. Right now it is at 83.54 rupees. So there has been a 40% difference. Now why did I pick the year 2014? Because that was the year I went abroad to study. अगर अब मैं जा रहा होता to study abroad, मेरे लिए तो cost of education has gone up by 40%. This is absolutely bad, right? I mean, that's all I can say. I don't know what else to say to this. This is just horrifying, right? कि अगर आप saving कर रहे हो अभी आज कि आप you want to go and study after 2 years abroad, then yeah, I don't know how much will the rupee fall by that particular time. You can invest in anything, right? I mean, so in India, the choice is very simple that, hey, either grow your money really fast
or see it lose its value. If you are a rich person, you have to diversify outside India also. US stock market के बारे में कुछ सीखो, international real estate के बारे में कुछ सीखो. All these are critical things. Even I am picking up. I enhance my knowledge about these areas every single day. It's not as if that I don't love my nation. I love my nation very much. I chose to study in Singapore, work in Singapore. बहुत अच्छे स्कूलों में मेरा एडमिशन हुआ था. I chose to come back. I still pay my taxes in India. But that does not mean that I am blind. Okay, I have to see all these things. I have to make decisions for me and my family, and I would request you to do the same. Which brings me to eighth and final point, that rationalists in India are going to do well. They are going to thrive. Others are going to have a very bad time. All of us worry about competition a lot. यार इंडिया में इतनी सप्लाई है, इतने सारे लोग हैं, this that stuff. Okay, but how many people are worth competing? Less than 1%. Okay, why? Because people are so distracted. People are distracted with absolutely dumb things, doing absolutely BS. If you are someone who is hardworking, who is focused, who is willing to have an open mind, listen to different side of the equations, reach your own conclusion. If you, in simple words, I have the ability to think, that is becoming a very good competitive advantage now. And yeah, and you can do very well for you, your family. So definitely focus on learning. Focus on growing, be open to learning about new things, and accordingly restructure your career path. No one is coming to save you. You have to save yourself, and you have to be accountable for your own life. I hope you enjoyed this video. If you did, do press the like button, and I will see you soon.